Hello, dear students, and welcome you all in this class of architectural structures where we are going to discuss RCC 2. So, as you know, that RCC is the acronym for Reinforced Cement Concrete, and this is a subject of design, not the analysis. हम इसमें कुछ एनालाइज नहीं करने वाले, जैसे कि आप सीयर फोर्स एनालाइज कर रहे हो बीम में, यहाँ पे कितना सीयर फोर्स होगा, बेंडिंग मोमेंट कितना होगा. दिस इज नॉट एनालिसिस कोर्स, दिस इज अ डिज़ाइन कोर्स. So just like in the previous semester you have gone through RCC1, which was also a design course but based on the design philosophy known as working stress method. So in the same fashion this semester also goes with the RCC2, and this is based on the design philosophy of limit state method. तो लिमिट स्टेट मेथड्स को एक्सप्लेन करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू सम ब्रीफ आइडिया. वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड इन द प्रीवियस मीटिंग ऑल्सो. सो लेट अस स्टार्ट. As you know, the concrete is a composite, and this is made of cement. Cement is the binder. किसे bind करना है? Coarse aggregate, because coarse aggregate provides the hardness, strength, toughness. सीमेंट में अपनी कोई एज सच स्ट्रेंथ नहीं होती, बट वो बस बाइंड करता है कोर्स एग्रीगेट. और कोर्स एग्रीगेट में हम क्या डालते हैं? बिकॉज कोर्स एग्रीगेट्स आर बिगर, सो देयर आर वॉइड्स, एंड टू फिल दोज वॉइड्स वी ऑल्सो यूज फाइन एग्रीगेट. फाइन एग्रीगेट होता है सैंड या फिर बजरी, जिसे आप कहते हैं रेत. एंड इन दैट विथ वाटर ऑल्सो, वाटर शुड ऑल्सो बी एडेड हेयर, वाटर एंड ऑल्सो दी एडमिक्सचर्स. एडमिक्सचर्स एक केमिकल्स हैं which are added to either to retard or accelerate the reaction rate of cement with water. So we know that there are two kinds of material. Material can be elastic, material can be brittle. Elastic मतलब तो समझते होंगे ना, अगर खींचे तो खींचता चला जाएगा. और जो brittle material है, अगर आपने थोड़ा सा shear force लगाया, they will easily get cracked into two pieces without giving sufficient warning. So fill the voids of coarse aggregate with fine aggregate, this is written there, and further with cement and make impermeable concrete. Impermeable concrete बनाना हमारा टारगेट होता है. Impermeable, you know that the water cannot pass from one side to the other side. This is our ideal state which we want, but we see that in the real life, we see in our home sometimes dampness is often looked at the walls. We try to avoid those things. तो कोई भी ब्रिटल मटेरियल की अगर आप देखेंगे ना, खास करके कंक्रीट की, तो एक अच्छी बात ये होती है कि कंक्रीट इज़ गुड इन कंप्रेशन. दो तरीके का डायरेक्ट लोड होता है. एक तो कंप्रेशन होता है, डायरेक्ट है कंप्रेशन, आपने उसे दबाया. दूसरी तरीके का एक डायरेक्ट लोड है. मैं आपको डायरेक्ट लोड और इनडायरेक्ट लोड बता चुका हूँ. डायरेक्ट लोड दूसरी तरीके का है टेंसाइल. अगर आपने टेंशन लगाया, देन कंक्रीट इज़ नॉट गुड इन टेंशन. You must be aware with this fact. If I talk of a concrete beam, और अगर इस पर अगर ट्रांसवर्स लोडिंग अगर लग रही है ऊपर से, अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड कोई पॉइंट लोड है, P है, तो इसमें आप जानते हैं कि ऊपर क्या आने वाला है, टेंशन आएगा या कंप्रेशन. तो यू नो दैट ऊपर कंप्रेशन आने वाले ऊपर के फाइबर्स में, और नीचे वाले फाइबर्स में क्या होगा? नीचे वाले फाइबर्स टेंशन को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे. So that's why what happens due to transverse loading, since concrete is weak in tension, so some minor cracks starts developing at the bottom of the concrete like this, and they start propagating towards the center. So this is the problem with concrete, and that's why we want to make it reinforced cement concrete. So at the bottom we provide the reinforcement bars of a steel which may be called as Fe415. ये नोटेशन है Fe415. मैंने स्टील के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया आपको. 415 उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है. वी विल ऑल्सो एक्सप्लेन दिस थिंग ऑल्सो एज वी गो फॉरवर्ड. सो दीज काइंड्स ऑफ बार्स वी एड एट द बॉटम. कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे हम टॉप पे भी प्रोवाइड करेंगे, बट इन सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम you assume that we have to provide steel bars at the bottom. If concrete is weak in tension and due to that at bottom cracks started developing, so the solution is that you have to provide an elastic material. देखिए जो इलास्टिक होगी ना,
उसी की डक्टिलिटी ज़्यादा होगी। सो विच कैन टेक मोर स्ट्रेन, यही है डक्टाइल होने का मतलब ये है कि अगर मैं उससे खींचूँ ना, सो इट कैन बी विड्रॉन इनटू अ वायर लाइक कॉपर. Copper is very ductile, that's why it is used for electric wires also. So ductile material can easily undergo more and more strain. Strain क्या होता है? Change in length divided by original length. देखिए इतना डक्टाइल होता है स्टील बार्स ना, 25% स्ट्रेन पे जाके फेल कर जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टेकन अ स्टील बार ऑफ 1 मीटर लेंथ, देन यू कैन एक्सटेंड इट अप टू 1.25 मीटर. आप सोच सकते हैं कितना ये डक्टाइल है. So that's why we provide such a material and will have more tensile strength. Tensile strength का कहने का मतलब यही है कि कितना भी फोर्स लगा रहे हैं, it is not breaking like brittle material. It is undergoing a strain. That's why it has got more strength. Why only at bottom? I hope this must be very clear. So in case of beam with flexor, ये बहुत important है. कई लोग बीम और कॉलम के बीच में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं. देखिए बीम और कॉलम ऐसा नहीं है कि बीम सर हॉरिजॉन्टल होती है और कॉलम सर वर्टिकल होती है, नहीं. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. बीम वो मेंबर्स हैं जिन पे लोड कैसा होता है, फ्लेक्सर काइंड ऑफ लोड. एंड कॉलम्स क्या है? कॉलम्स आर दोज मेंबर्स विच एक्सपीरियंस डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड. अब ये फ्लेक्सर क्या है? फ्लेक्सर का एक साइनोनिम मैंने आपको बताया होगा, बट फिर भी आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं. फ्लेक्सर मीन्स बेंडिंग. एंड बेंडिंग, हाउ डज बेंडिंग अकर्स? इफ देयर इज सम ट्रांसवर्स लोडिंग. एक तो होती है ट्रांसवर्स लोडिंग. ट्रांसवर्स लोडिंग कहने का मतलब अगर ये बीम अगर है, अगर ये कोई मेंबर है, अगर इसके परपेंडिकुलर कोई लोडिंग अगर एक्ट कर रही है, सच अ काइंड ऑफ लोडिंग इज ट्रांसवर्स लोडिंग. दूसरी टाइप ऑफ लोडिंग क्या हो सकती है? लॉन्गिट्यूडनल लोडिंग, लाइक दिस, इफ आई एम पुलिंग इट लाइक दिस. ठीक है, सो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल लोडिंग. और उन बीम्स में हम बॉटम में प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज एज वी हैव सीन, बिकॉज इफ वी डोंट प्रोवाइड, क्रैक्स विल स्टार्ट डेवलपिंग. आई वुड लाइक टू टॉक ऑफ वन केस ऑल्सो in which we have to provide the reinforcement bar at the top of the beam, not at the bottom. And that is the case of cantilever beam. Cantilever beam क्या होता है? We all know that if this is my wall, cantilever beam is like an overhung beam. ये क्या होता है? इसमें एक तरफ तो फिक्स सपोर्ट है, दूसरी तरफ फिक्स सपोर्ट नहीं है. जैसा कि आप अपने किसी विंडो के ऊपर सनसेट को देखा होगा आपने. सो इन दिस केस द लोडिंग इज ट्रांसवर्स एंड द लोड एक्ट्स फ्रॉम द टॉप लाइक दिस. दिस इज अ यूडीएल. तो इस केस में क्या होगा, आप थोड़ा अपना खुद ही कॉमन सेंस से सोचो कि क्या हो रहा होगा. इसमें जो हो रहा होगा, अगर लोड ऊपर से ट्रांसवर्सली एक्ट कर रही है, तो अभी नीचे के फाइबर्स क्या एक्सपीरियंस कर रहे होंगे? नीचे के फाइबर्स अभी कंप्रेस हो रहे होंगे, whereas the fiber at the top would be experiencing tension. है या नहीं? ठीक है. So that's why in this case we have to indispensably provide the reinforcement bars at the top. So this is the only case where we have to provide the reinforcement bar only at the top, not at the bottom. Now the next question that can come into the mind, that why do we use only iron, alloys or steel as reinforcement bars? The very first reason is that iron ore is the most readily available material on the earth's surface as a resource. And if some resource is available in abundance, then its cost becomes cheaper. And vice versa, if something is not available readily, its cost become very high. So we can't afford the other materials as a reinforcement bars into concrete. So this is the first reason why we go for iron or a steel as a reinforcement. The second reason is much more convincing, because the one mechanical property of concrete matches exactly with the same mechanical property of a steel, and that is the thermal expansion coefficient. This is the quantity that relate the expansion or contraction of a material. See, when you are going to make a composite में क्या होता है, two or more than two materials are there, and if
their thermal expansion coefficients are not same, then what happens if you heat them? I think you must have studied in your 11th or 12th class. Suppose if there is a specimen of steel specimen like this, and there is another specimen of copper like this. Both have different thermal expansion coefficient, and if you heat them, alpha of steel is not same as alpha of copper, then what happens? So this is the deformed shape of the bimetallic strip at T plus delta T degrees Celsius. It has deformed into a curve. You can see it. So this is because the alpha values are not same for the both materials. But in case of RCC, alpha value of a steel bars is almost same as the alpha value of concrete. So they are almost equal. This is the sign of almost equal, and this avoids relative motion between the two material. अगर दोनों की वैल्यूज अगर डिफरेंट होती है ना तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, एंड दैट कैन बी द सोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स. और ये होता भी है. आपको बताऊँ ना कि कई बार आप जब बिल्डिंग्स में क्रैक्स देखते हैं ना तो आप समझ लेना कि सर या तो बहुत ज़्यादा रिइंफोर्समेंट डाल दिया गया है. बहुत ज़्यादा स्टील डालने से क्या हो जाता है, द स्टील विल नॉट deform as much, the concrete is deforming. So there starts development of relative motion, or relative motion is the cause of development of cracks. But in the course of design we understand that how much amount of steel I have to provide into a cross section, seeing the load and the material and the cross sectional size. So we understand how much we have to provide. So the value of alpha steel and alpha concrete is same, so there is no relative motion between the two material, and that's why the both can act as a good constituent for development of a composite like RCC. और अगर आपको RCC बनानी है तो इन दोनों से ज़्यादा सुटेबल और कोई मटेरियल है ही नहीं. And with the help of RCC we can design simple structural elements like beams, columns, slabs. Slabs are the roofs, and then footings are the foundation, retaining structures, dams, etc. So the designing of all these structural component is being done with the help of RCC as the basic material, and this is based on the requirement of the building, requirement of the clients, the type of loading that is going to come on the building, the environment in which the building is exposed to, or the available kinds of resources that is there, or the economic feasibility or capacity of the person or the contractor. So we design all these component with the RCC depending on the different requirements. All right, so this was all from my side as an introduction to this subject, and in the next video we will surely try to introduce you the design philosophy of limited state method. So till that, stay tuned. Thank you.